Hey, hi everyone. Welcome to today's session. I am Rohit, and in this class, we are going to learn about Apache Spark architecture. Spark is one of the most powerful big data frameworks, and to really use it well, we need to understand how it works internally. So let's dive in step by step. What is Spark? So Apache Spark is a distributing is a distributed data processing framework. Apache Spark is a distributed data processing framework. That means it can handle very large data sets by splitting the work across multiple machines and processing them in parallel. So we can parallelly process data here, as we have seen in last lecture. So by using Spark, we can process our big data. Okay, so today we are going to learn Spark architecture. Okay, so Spark uses a master slave architecture. Spark uses a master slave architecture. The main task of Spark is to distribute data across the cluster. So as you know that in Spark, data will be processed in parallelly. Okay, data will be processed parallelly. So that's why the Spark is to distribute data across the cluster and process the data in parallel over the nodes. Okay, so Spark architecture contains Spark architecture contains, or we can say the components of Spark architecture are Spark driver, executor, cluster manager, and worker nodes. I will repeat once again. The components of Spark architecture or Spark architecture contains Spark driver, executor, and cluster manager and worker nodes. Okay, so Spark driver is the main controller of the execution of a Spark application or Spark job. So this Spark driver is the main controller. Okay, it will control all the execution process. Okay, whatever the Spark application will be execute. So the it so Spark driver will control that process of Spark application. Okay, the execution process of execution of Spark application. Okay. So Spark driver is master. So see, Spark uses master slave architecture. Means in this in Spark architecture, the Spark driver is master. Okay, Spark driver is master, and Spark executors are slave. Okay, Spark executors are slave. So see, Spark, what is the work of Spark executor? Okay, what is the work of Spark executor? So Spark executors, it will it will execute or perform the task. Okay, it will execute or perform the task which is assigned by the Spark driver. Okay, whatever the task is assigned by the Spark driver, that task will be executed by Spark executors. Okay, and cluster manager is there. Okay, so cluster manager, it is responsible for maintaining a cluster of machines that will run our Spark application. Means cluster manager will provide the it will allocate the resources basically, and it will you know it will allocate CPU, central processing unit. It will allocate memory. So it will maintain. Okay, it will maintain the cluster of machines that will run our Spark application. So you can see in this diagram, here is a Spark driver. Okay, Spark driver. Then here is a cluster manager. So this uh,
Spark driver or a driver program, it will make a connection with worker node with the help of cluster manager, and uh, it will Spark driver, it will assign the task to the worker node. And you can see in worker node there are executors, multiple executors. Here is executor 1, executor 2. So I mean, different worker nodes will be there. So here is executor, you can see executor here also. So the the task assigned by the driver program, that task will execute by the worker nodes. Okay, in worker nodes there are executors, so these executors will execute the task. Executors will execute the task. Okay, so we will see exact how it happens. Okay, so Spark job life cycle, we will see now the Spark job life cycle, step by step flow. Okay, so how it will happen. So see, for example, I'm going to run this code. Okay, I'm going to run this code. So we are reading one CSV file here. Okay, we are reading one CSV file here, and then we are applying drop duplicates transformation. Also, we are applying drop NA transformation. We are uh, performing action on the data frame to show the result to get the output. And again, we are writing the data. We are writing the data into the target path. Okay. So suppose this is one our code. This is our one Spark application. This is one our Spark job. So how exactly it happens? How exactly it happens? Like step by step flow we will see. Okay, so we will see the job life cycle, Spark job life cycle, Spark job life cycle, step by step flow. So once, firstly users submit the code applications. It means suppose we have written the code here. Okay, we have written the code here. So it will firstly go to the driver program. Whatever code we write, whatever the Spark code we write, so that will go to the driver program. Okay, that will go to the driver program. Then the Spark context or Spark session will be initiated. Okay, driver driver will initiate Spark context or Spark session. So what is Spark context and Spark session? So Spark session and Spark context are the entry point. Okay, are the entry point for the Spark. If you want to create data frame, so we will firstly need to create, build the Spark session. So driver will driver will initiate Spark context or Spark session. Okay, then DAG DAG will be created, and creates DAG will create logical plans. It will create logical plans with job stages and tasks. Okay, I will repeat once again from the starting. Okay, firstly user means firstly we have submitted the code, we have written the code. Okay, and it will submit it to the driver program. Okay, then driver will initiate Spark context or Spark session. Driver will initiate or uh, a driver will initiate Spark context or Spark session. Then DAG will create logical plan. Okay, DAG will create logical plan with job stages and tasks. So what is meant by logical plans, or what is meant by logical plan? So dog sorry DAG will have all the information regarding the transformation and action. DAG will have all the information regarding the transformations and action. Whatever the transformations and action we are performing on this data. Okay, so all this information will have to do the DAG. DAG means directed acyclic graph. Basically,
Basically, DAG means what? Directed acyclic graph. Okay, so DAG is a visual representation. DAG is DAG is a DAG is visual or graphical representation of the transformation and action. It means DAG has all the information regarding the transformation and transformations and action. ओके, डैग के पास टोटल इंफॉर्मेशन होगी कि इस कोड में हम कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं. सो इसके पास एक पूरी पूरा प्लान होगा. ओके, इट विल क्रिएट वन प्लान, it will create logical plan with jobs, stages and tasks. Okay, so that means what? It is visual or graphical representation of transformation and action, and it shows how data flows through stages and tasks. It shows how data flows through stages and tasks from start to finish, from start to finish without cycles or loop. So DAG is like a flowchart of operations that Spark uses to plan and execute your job. So it will have all the information. Okay. So what is meant by job, stage and task? What is meant by job, stage and task? So see, this is our code. Okay. So this is one job we can say. Okay. For example, this is one our job. ये हमारा एक जॉब है एंड उसमें डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं. ओके, इट विल जॉब स्टेजेस में डिवाइड होता है. जॉब स्टेजेस में डिवाइड होता है. देखो यहाँ पर स्टेज 1 एंड स्टेज 2. ओके, सो हियर यू कैन सी स्टेज 1, स्टेज 2. so job is divided into stages and stages, and again the stages are divided into tasks. You can see task 1, task 2, task 3 and task 4. So job is divided into stages and stages are divided into the tasks. Okay, so you can see for example, this is our Spark application or Spark job is divided into the job, and job again divided into the stages, and the stages are divided into the tasks. Okay, so you can see. So what is job? So job is a process of parallel computation. Job is a process of parallel computation, and it involves execution of multiple tasks. It involves it involves execution of multiple tasks. Okay. Then what is stage? What is stage? So a stage is a group of tasks that can be executed together in parallel. A stage is a group of tasks. Is a group of tasks that can be executed together in parallel. Okay, then what is task? So task is a unit or chunk of data. It is unit or chunk of data that is sent to the executor, and each executor runs one to many tasks. Okay, so this is job, stages and tasks. So हम क्या देख रहे थे कि स्पार्क जॉब लाइफ साइकिल हम देख रहे थे स्टेप बाय स्टेप. सो आई विल रिपीट वंस अगेन. सो पहले हमने एक स्पार्क एप्लीकेशन और स्पार्क कोड सबमिट किया. वो पहले ड्राइवर मतलब ड्राइवर प्रोग्राम के पास जाएगा. ड्राइवर प्रोग्राम क्या करेगा? ड्राइवर प्रोग्राम स्पार्क कंटेक्स्ट या फिर स्पार्क सेशन को इनिशिएट करेगा, एंड उसके बाद डैग डैग क्या करेगा? डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. डैग लॉजिकल प्लान क्रिएट करेगा. ओके, विथ जॉब्स, स्टेजेस एंड टास्क. सो डैग क्या रहता है? सो डैग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है. विजुअल रिप्रेजेंटेशन किसका? सो व्हाट एवर वी आर executing or performing the transformation on the data. So whatever we are going to
apply the transformation and action. ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ड्रॉप डुप्लीकेट ट्रांसफॉर्मेशन है, ड्रॉप इन ये ट्रांसफॉर्मेशन है, df डॉट शो ये एक्शन है। ओके, हम डेटा को राइट कर रहे हैं, ये एक एक्शन है। सो ये पूरी जानकारी डैक के पास रहेगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन की, हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। सो इसकी पूरी जानकारी किसके किसके पास होगी, डैक के पास। ओके, सो डैक डैक क्या करेगा, एक लॉजिकल प्लान बनाएगा। इस इंफॉर्मेशन, by using this information, DAG will create one logical plan। ठीक है, लॉजिकल प्लान बन गया। अब क्या होता है, अब क्या होता है, then then the driver establishes a connection with the worker node। फिर उसके बाद क्या होता है कि ड्राइवर क्या करता है, वर्कर नोड के साथ एक कनेक्शन बनाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर मैनेजर। सो क्लस्टर मैनेजर की हेल्प लेके क्लस्टर क्लस्टर मैनेजर की हेल्प लेके ड्राइवर प्रोग्राम वर्कर नोड या फिर एग्जीक्यूटर के साथ, वर्कर नोड के साथ कनेक्शन बनाता है। ड्राइवर प्रोग्राम वर्कर नोड के साथ कनेक्शन बनाता है विद द हेल्प ऑफ क्लस्टर मैनेजर। ये कनेक्शन क्यों बनाता है, क्योंकि ड्राइवर प्रोग्राम अभी क्या करने वाला है कि जो भी टास्क है ना, वो टास्क वर्कर नोड को असाइन करने वाला है, एंड वो टास्क ये वर्कर नोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, देखो अभी कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया, उसके बाद क्या करेगा ड्राइवर, देन ड्राइवर असाइन टास्क टू द वर्कर नोड। फिर कनेक्शन होने के बाद ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर विल असाइन द टास्क टू द वर्कर नोड, एंड इन द वर्कर नोड, in the executor there are 4 slot thread। एग्जीक्यूटर में क्या रहते हैं, 4 slot thread रहते हैं। ओके, 4 slot thread रहते हैं। देखो अभी वर्कर नोड में एग्जीक्यूटर है, एंड एग्जीक्यूटर में 4 slot एंड थ्रेड रहते हैं। ठीक है, सो वर्कर वर्कर मीन्स एग्जीक्यूटर। ओके, वर्कर में एग्जीक्यूटर्स रहते हैं। सो वर्कर नोड्स और दैट एग्जीक्यूटर्स विल एग्जीक्यूट द टास्क एंड रिटर्न रिजल्ट्स टू द ड्राइवर। जो भी ड्राइवर प्रोग्राम ने जो भी ड्राइवर प्रोग्राम ने वर्कर नोड को टास्क असाइन किए है, वो टास्क वर्कर नोड एग्जीक्यूट करेगा। उसमें एग्जीक्यूटर रहता है, वो एग्जीक्यूटर क्या करता है, वो टास्क एग्जीक्यूट करता है, एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ड्राइवर प्रोग्राम को सेंड करता है। ओके, ड्राइवर प्रोग्राम को सेंड करता है। वर्कर और एग्जीक्यूटर्स विल एग्जीक्यूट द टास्क एंड रिटर्न रिजल्ट टू द ड्राइवर। ड्राइवर को रिजल्ट देता है, वो ड्राइवर को वो रिजल्ट देता है, एंड ड्राइवर generates output to the user। ड्राइवर ड्राइवर generate आउटपुट टू द यूजर। और जो भी हमने टास्क किया पर, मतलब जो भी ये जॉब जॉब ये लिखा है वहां पर, ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट आएगा। ओके, हमें यहाँ पर आउटपुट आएगा, मतलब यहाँ पर हमें दिखेगा। ठीक है, सो हमें आउटपुट मिलेगा। सो ये ड्राइवर जनरेट करता है एंड हमें सेंड करता है, भेजता है। ठीक है, हमें यहाँ पर वो दिखता है। ओके, एंड स्पार्क एप्लीकेशन एंड्स। सो इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि स्पार्क ड्राइवर का काम क्या है, व्हाट इज स्पार्क ड्राइवर, क्या है, क्या करता है, वो उसका मेन काम क्या है। सो स्पार्क ड्राइवर इज द मेन कंट्रोलर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्पार्क जॉब। ओके, इज द मेन कंट्रोलर, इज द main controller of the spark of the execution of a spark application। Then spark executor execute or perform the task which is assigned by the spark driver। जो भी spark driver ने task assign किए हैं, वो execute कौन करेगा, spark executors। okay, and the cluster manager which is responsible for maintaining a cluster of machines that will run our spark application। जो भी CPU memory, okay, ये resources जो भी लगने वाले हैं वो allocate करने का काम ये क्लस्टर मैनेजर करता है। ओके, सो दिस इज आवर स्पार्क आर्किटेक्चर। वन क्लस्टर इक्वल टू वन ड्राइवर,
Okay, वन क्लस्टर इक्वल टू वन ड्राइवर, एक क्लस्टर में एक ड्राइवर रहता है. वर्कर नोड्स कैन बी मल्टीपल डिपेंड ऑन डेटा. ओके, वर्कर नोड्स कैन बी मल्टीपल डिपेंड ऑन द डेटा. टू ड्राइवर्स, दो ड्राइवर रहते हैं, वन इन क्लस्टर एंड वन इन मेन स्पार्क. एक क्लस्टर में रहता है एंड वन इन मेन स्पार्क. क्लस्टर में वर्कर नोड में बाय डिफॉल्ट चार एग्जीक्यूटर्स रहते हैं. बाय डिफॉल्ट फोर एग्जीक्यूटर रहते हैं. इफ वन एग्जीक्यूटर हैव फोर कोर, इट मींस फोर पार्टीशंस आर देयर. अगर एक एग्जीक्यूटर में चार कोर है, एक एग्जीक्यूटर में चार कोर है, सो वहां पर चार पार्टीशंस होंगे. ओके, सो इट मींस वन कोर इक्वल टू वन पार्टीशन. आपको पता है कि स्पार्क में पैरेलली डेटा प्रोसेस होता है. ओके, स्पार्क में पैरेलली डेटा प्रोसेस होता है. सो तो वहां पर डिफरेंट कोर रहेंगे, डिफरेंट पार्टीशन रहेंगे. ओके, फोर कोर इक्वल टू फोर थ्रेड. अगर फोर कोर है तो वहां पर फोर थ्रेड होंगे. सो वर्कर नोड में एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर में कोर रहते हैं. ओके, सो इफ फोर कोर, देन डेटा विल पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट ऑन फोर कोर एंड प्रोसेस द डेटा. सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सो अगर अगर वहां पर चार अगर वहां पर चार कोर है, then the data will parallelly distribute on four core and process the data. Okay, so parallelly data processing ऐसे होती है यहाँ पर. Okay, so what we have seen, so Spark has four uh, four main components. Spark has four main components, that is driver, cluster manager, executors, worker nodes, and also task. Okay, a job is created when we run an action. Jobs are split into stages and stages are split into tasks. Executors run tasks in parallel and send results back to the driver. So this is the Spark architecture, the backbone of how Spark processes big data. So the big picture is simple. Driver is the brain, is the main controller. We can say driver is the brain. Cluster manager allocates resources and executor क्या करते हैं? Executors do the actual work. Okay, and task क्या करते हैं? So means task क्या रहता है? So task are the smallest units of execution. Okay, in our next session, we will move one step ahead and look at how Spark handles RDD data frame operations with examples. So thank you for your attention, and I hope the Spark architecture is now crystal clear to you. Yeah, thank you so much.